Hello, good morning, all of you. How are you? Good morning, sir. Good Good morning. morning, Good sir. morning. Morning, Thank sir. you. Thank you so much. तो आज हम लोग रिफ्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. रिफ्लेक्सेस के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस दैट आर सीन इन आवर बॉडी. Regarding attendance, I request you all to please write in the chat. अब चैट में जा करके आप लोग अपना नेम का इनिशियल और रोल नंबर लिख दो. आई होप कि आज फिर से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वी कैन हैव द बेटर इंटरैक्टिव डिस्कशन. आई वांट कि मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन भी करो, थोड़ा सा इन चीज़ों को डिस्कस करो. मैं टॉपिक पहले दिखा देता हूं आपको कि कल क्या पढ़ाने वाला हूं. इस तरह से आप लोग थोड़ा सा यदि चाहो तो पहले भी पढ़ सकते हो. यू कैन हैव ऑन योर बुक, आप बुक सामने रख सकते हो यदि बुक है आपके पास तो, और पढ़ने में थोड़ा इजी रहता है उन टॉपिक्स को. So let's start. Today we will discuss about reflexes. So when somebody say word reflex, what does it mean? It is defined as an involuntary and nearly instantaneous movement. Means ये एक involuntary और instantaneous movement है in response to a stimulus. So basically it is the stimulus or response की बात होती है, and that is basically instantaneous. When we say the motor reflex, it is basically a mechanism by which a sensory impulse is converted into motor effect. यदि हम मोटर रिफ्लेक्सेस की बात करें तो सेंसरी इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू मोटर रिफ्लेक्स इफेक्ट थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ CNS. So in the definition of reflex there are three important things we have. One thing is the sensory impulse, another thing is the motor effect, and third is the involvement of CNS. Means reflex is defined as a you can see as a three broad component. One thing is the sensory information, second thing is the central nervous system, and the third is the effect in the form of motor. So central nervous system is behaving like an integrator center. It is behaving like an integrator center. Means ये integrate करता है हमारे sensory information को. This thing we have discussed so many times. For sensory impulse we need a receptor, and for motor action we need an effector. So for motor action के तो रिफ्लेक्स के 5 important component हो गए. पहला component हो गया receptor, then efferent या sensory nerve, then there is the integrator center which is the central nervous system, then efferent nerve, and finally is the effector organ. And this whole arc, not the circle, this whole arc is called as reflex arc. So when we say the reflex arc, it is basically a 5-component system in which a sensory impulse is converted into motor effect, in which central nervous system is the integrator center. Now about classification of reflex. On the basis of integrator center, कहाँ पे integration हो सकता है? Either इनके integration हमारे spinal cord के level पे हो सकते हैं. So the reflex is called as spinal reflex. For example, knee jerk reflex. When we say the knee jerk reflex, for that knee jerk reflex, if a person is sitting, suppose sitting with the legs dwindling over it, and if it is given a impulse in the form of a knee hammer के form में यदि उसके patellar tendon को hit किया जाए, what happens? That patellar tendon
we know it is the extension, or it is the basically the attachment of the quadriceps muscle. So that quadriceps muscle will have the stretching of force. So that यहाँ पे force पड़ने की वजह से it will have the stretch, and that stretch is sensed by the muscle spindles in it, and that muscle spindles will send the signal to the spinal cord, and in the spinal cord basically through the dorsal horn, and from there the efferent nerve which come which arise efferent nerve which arise, and they basically again go to the extrafusal fibers of that same muscle, and that muscle get contraction. So there is the contraction of that muscle, and that leads to, अब इस मसल का यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा quadriceps muscle का, what happens, that contraction of muscle will lead to the movement of the limb in the form of lower limb and towards the extension of the limb. So ultimately the knee jerk reflex, you can see that knee jerk reflex is basically a simple reflex which has its integration center is in the integration center is at the level of the spinal cord, and there is only one synapse in it, and that's why this type of reflex is called as monosynaptic reflex. Now I am rubbing this. Another type of reflex is depending upon the another type of reflex is basically is called depending upon the integrator center. Another type of reflex is basically called the cranial reflex. So the cranial reflex is in which the integrator center is present in the brain, or we can say the brain stem. Mostly that brain stem reflex, it means these are the reflexes which are having the integrator center either in the pons or the medulla or the midbrain, and these reflexes are basically called as the cranial, or you can say the central reflexes. So the spinal reflex and cranial reflex. Here, the cranial reflex basically also indicates that the effector or the efferent nerves are the cranial nerves in it. इनके अंदर cranial nerves भी efferent nerves होते हैं. So there are two basic type of reflexes depending upon the integration center. ये integration center हमने कहाँ पे देखा? That was basically in the reflex arc के अंदर हमने एक word देखा था, that is जहाँ पे reflex का sensory और motor का integration हो रहा है, जहाँ पे दोनों का interaction हो रहा है, that is basically depending upon the reflex arc का किस जगह पे integration. Another type of classification is depending upon the muscle involved. Depending upon the muscles involved, reflexes are called as the somatic reflex because they involve the contraction of skeletal muscles. If they having involvement of smooth muscles, or you can say the cardiac muscles also, then this type of reflex is called as autonomic reflex or the visceral reflex. You must be going अभी आप लोगों का एक क्लासेस चल रहा है दूसरे साइड बाय साइड में autonomic nervous system. In that you must be having some view or understanding of the some reflexes in which the efferent components are the autonomic components like the sympathetic and parasympathetic nerves. So there are a few students which are joined right now. They are requested to kindly write in chat that your roll number and the name initiation. आप अपना name का initiation और वो उसके अंदर डाल दें. So depending upon the type of the effector organ, not we will say the muscle, we will say the type of effector organ. So depending upon the type of effector organ, this muscle, this
reflexes are called as the somatic reflex and another is called as the visceral reflex. Examples of visceral reflex. What are the examples of visceral reflex? Visceral reflex like the supplying the afferent nerves supplying our sphincters in the GIT और उनके अंदर जो है जैसे उनका खुलना and that response. Or for example, the visceral reflexes are like the our cardiac reflex, like in the case of the baroreceptor induced. जैसे baroreceptor की वजह से हमारा cardiac को सोचा that baroreflex जो हमने पढ़ा था BP रेगुलेशन के लिए and वहाँ पे जो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन on the response of the high blood pressure के वजह से एक baroreflex. So there are so many visceral reflexes we know. So one example is like baroreflex. It is an example of the autonomic or the visceral reflex. There is another reflexes also called as the visceral reflex. So many depending upon the number of synapses. जैसे अभी हमने पहले वाले reflexes में spinal reflex के example में बताया था कि यदि एक synapse है तो then that type of reflex is called as monosynaptic reflex. When we talk about the stretch reflex, किसी muscle के को directly hit किए जाए उसके tendon को और उसकी वजह से जो उसमें stretch आए और that stretch के response में muscle का contraction होना, that is basically called as the example of the stretch reflex. And examples are like the biceps reflex, triceps reflex, knee jerk reflex. These are basically depending upon the number of synapses. In next class, tomorrow, we will discuss about the different types of reflexes, how these reflexes are tested, कैसे टेस्ट किए जाते हैं और वो reflexes कैसे कैसे होते हैं. We will study in details about the individual reflexes like biceps, triceps, as well as we will also discuss about the superficial and deep reflexes. Next class में हम लोग सभी reflexes के बारे में detail पढ़ेंगे and that understanding of the reflex like our somatic reflexes are very important part to understand the neurophysiology because ये एक ऐसा component है जो हमारे reflex arc के बारे में पूरा detail बता देता है. So that's why we need to know about the individual reflexes. Another type of reflex, depending upon the number of synapses, is called disynaptic reflex. They are having the two synapses. For example, there is one interneuron. It means there is an interneuron is placed between efferent and efferent nerves. Means यदि एक efferent और efferent nerve है, integration center में एक interneuron यदि है, यदि if there is an interneuron in between, which are carrying the information from the sensory to the motor, and that interneuron is behaving for that as a connection or connecting link, then that type of reflex is called as disynaptic reflex. Example of disynaptic reflex is inverse stretch reflex. And what is inverse stretch reflex? That we have studied that whenever we give the high tension, to the muscle tendon, if the muscle tendon contains one another type of receptor basically called the Golgi tendon organ, and in response of that the same muscle which are contracting earlier which become inhibiting in response of the Golgi tendon response. So because of that there is inhibitory interneurons are present in the spinal cord and which causes basically the relaxation of muscle in response of excessive stretch. Means normal stretch या हल्का फुल्का stretch जो हम लोग knee hammer से या tendon jerk के लिए टेस्ट कर रहे थे, that causes the muscle contraction. But when we give the excessive stretch, यदि ज़्यादा जोर से मार दिया जाए tendon पे, इतना जोर से मार दिया जाए कि उसको painful stimulus हो, so that painful stimulus or that tension force का stimulus that leads to the relaxation, जिसकी वजह से relaxation हो जाए. तो इसके लिए there is a in between one interneuron is placed, and that interneuron is basically causing the relaxation of this. So this is called as the disynaptic. Third type of reflex examples are the polysynaptic reflex.
Polysynaptic reflex, there is a number of more than one interneurons are placed between the afferent and efferent neuron. And examples of the polysynaptic reflex are the withdrawal reflex. What was withdrawal reflex? Whenever a painful stimulus are given to one particular limb to support the balance or the posture of the body, we have the another limb also have some activity. एंड सो एक साइड के लिम्ब को यदि कोई पेनफुल स्टिमुलस मिले तो दूसरे लिम्ब को कोई सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़े. वो सपोर्ट कैन बी ए फ्लेक्सर, दैट कैन बी एक्सटेंसर सपोर्ट. कभी कभी हमें फ्लेक्स करना पड़ता है इंजरी से बचने के लिए, या कभी कभी हमें एक्सटेंड करना पड़ता है. सो आइदर द क्रॉस्ड एक्सटेंसर और द क्रॉस्ड फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, क्योंकि इसमें मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व हैं. That's why this is called as polysynaptic reflex, because one particular neuron or two particular neuron cannot do the all actions. That's why the polysynaptic reflex is basically having the more than two synapses involved in it. Another classification is called as anatomical classification of reflex. Anatomical classification is depending upon the number of the reflex arc center, or you can say we can say that it is basically the division of that cranial reflexes. जो cranial reflexes का जो division किया जा रहा है, यानी integrator center के division किए गए. जो cranial part हमने बताया था कि जो cranial cavity के अंदर जिनके centers हैं, there are few reflexes which are originated at the cortex, which are at the level of the cerebellum, which are at the level of the medulla or the midbrain. So they are also at the level of the pontine. So there is also the pontine reflexes also. So there are so many reflexes, but in this only the location of the reflex arc center or the integrator center has been discussed, and that type of reflex is called as anatomical classification of reflex. You may get the words in the book that midbrain reflexes का example दीजिए, cerebellar या medullary reflexes कौन से होते हैं, like the reflexes which like our barrow reflex, it is the example of the medullary reflexes. Similarly, there are so many reflexes depending upon the location. Functional classification of reflex. Functionally, it is basically it can be the flexor reflex, it can be extensor reflex. So if the stretch reflex the stretch reflex is involving the flexion of the limb, flexion of the joints, because of in response of the nociception or the pain stimuli, then that type of reflex is called as flexor reflex. Another, if the reflex is involved the use of the posture or maintaining the posture or posture को manage करने के लिए we need sometimes extension of one particular limb, and that type of reflex is called as extensor reflex. So this is called the functional classification. There is a few classification of reflexes are based on how the reflexes are originated, when the reflexes, not the how, basically when the reflexes are originated in us. Some reflexes are from our birth. कुछ reflex ऐसे होते हैं जो हमारे पास birth से ही होता है, और कुछ reflexes ऐसे होते हैं जो कि हम learn करते हैं, हमारा body, हमारा motor system ये learn करता है. जो सिस्टम हमारा लर्न करता है that is called as the acquired reflex, and जहाँ पे हमारे जो already birth के साथ indigenously involved हैं, that type of reflex is called as basically that type of reflex is called as inborn reflex. Then you must be want to know the examples of inborn reflexes, and inborn reflex are also called as unconditional reflex. Unconditioned reflex. They do not require any previous training or learning. For example, salivation. जैसे किसी छोटे बच्चे के जीभ पे या मुंह के पास यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, it is not necessary कि खाने का ऑब्जेक्ट या टेस्टी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका salivation होगा. Because at that phase of life, उस phase of life में वो बच्चे के अंदर बेसिकली एक वो टेंडेंसी होता है, उस फेज में उनके अंदर वो टेंडेंसी होता है कि वो जो भी आएगा वो उसे खाएगा ही. सो वो उसे
and to digest that, there is our body system in such a way, they are such a way adapted system of body, they causes basically the salivation, and that is called a reflex salivation, and that is the example of the unconditioned reflex. Though, you can unmute yourself if you want to ask any question. You can unmute yourself and ask me. There are two students I have raised at different times. So if you want to ask, please unmute yourself, and otherwise I am. यदि आपको कुछ पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक जी करके किसका नाम? हाँ पूछिए प्लीज, यू कैन आस्क मी। सर वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। यदि गलती से हो गया था तो कोई बात नहीं। Okay, and let's continue. So the another type of reflex is basically is the acquired or conditional reflex. अच्छा, यदि आप लोगों से कभी गलती से ऐसा हो जाए तो आप ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ लिया करो, सर ऐसा बोल दिया करो, सर ये टॉपिक फिर से रिपीट कर दो, या ये वाला स्लाइड को फिर से बता दो, तो आपको गलती का एहसास नहीं होगा, एंड यू कैन स्किप द। ऑनलाइन के यही एडवांटेजेस हैं, तो यू कैन डू द। Okay, so coming to the again, the another type of reflex is basically called acquired, but that reflex is also called as conditioned reflex. हम लोग जब learning and memory chapter पढ़ेंगे, जो means how we memorize the concepts or how we learn any skills. So at that time we will again discuss this topic, that is the inborn and acquired reflexes. At this time, अभी के टाइम में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स ऑफ एनी साइट, स्मेल, थॉट और हियरिंग ऑफ द नॉन एडिबल सब्सटेंस। यदि कुछ अच्छा खाने का सब्सटेंस की चर्चा हो, सिर्फ चर्चा हो, जैसे कि यदि आप लोगों को यदि केक पसंद है तो केक, यदि किसी का बर्थडे का केक यदि आपने देख लिया है, सिर्फ फोटो भी देखते हैं, तो यू कैन हैव सम रिफ्लेक्स सलाइवेशन। यदि उसको सच में देख लिया, आपके नजर के सामने आ जाए, या उसे स्मेल करें या उसे हियर करें, लेकिन ये वाली चीजें हमारे छोटे बच्चों के पास नहीं होगा, जो इनबॉर्न है, जो न्यू बॉर्न है, उनको उससे रिफ्लेक्स नहीं आएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस? एट द डिफरेंस इज व्हाट, कि हमने उस केक को देखने के बाद हम जानते हैं कि ये खाने का सब्सटेंस है और ये टेस्टी सब्सटेंस है, ये ऐसा है जो मुझे हर बार अच्छा लगा है खाने में। दैट्स वाई उसके बारे में सोच के भी, उसकी चर्चा भी हो, उसके बारे में स्मेल करके भी या देख के भी, उन चीजों को तब भी यदि हमें रिफ्लेक्स, तब भी यदि हमारा सैलिवेशन हो, तो सेम एग्जांपल ऑफ द सलाइवेशन, यदि हम सलाइवेशन ही दोनों में लिया है, बट सलाइवेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जस्ट टच, not the cap, just touch to the mouth of a newborn, it is called as the inborn reflex. And but that thing, like the unknown things, that the same substance kept or touched to our body, ourselves, हम लोगों को यदि किया जाए तो हमें salivation नहीं आता है, क्योंकि if we know that it is not the edible thing, but यदि edible thing यदि आए, क्योंकि हमारा previous learning हो गया, so हमारे नर्वस सिस्टम में वो एक्वायर कर लेती है, एंड दैट लर्निंग और दैट एक्वायर्ड ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द उसके अच्छे या उसके बुरा होने का जो कंसेप्ट है, सो दैट लीड्स टू इज कॉल्ड एज द कंडीशनिंग। ये इसका एग्जांपल हम लोगों ने स्कूल टाइम में भी एक पढ़ा होगा, दैट इज एक डॉग के सामने बेल बजाते थे और बेल बजा के उसे खाने के लिए मीट का टुकड़ा या लोफ देते थे। तो पहले जब उसको मीट का टुकड़ा उसके सामने आता था बेल बजने के बाद 2-3 दिन तक, एंड तब उसको सलाइवेशन होता था। लेकिन आफ्टर फ्यू डेज ऑफ लर्निंग दैट कि एवरी टाइम बेल साउंड इट लीड्स टू फूड इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड दैट टाइम, तो बाद में देखा गया कि बाद में सिर्फ बेल बजाने के बाद ही उसको सलाइवेशन होने लगता है डॉग को। सो दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ द कंडीशनड और कंडीशनल रिफ्लेक्स। दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज कॉल्ड एज Pavlov's. Pavlov was a biologist. He basically told us that what is basic.
So that Pavlov experiment is basically to explain you the conditioned reflex, and you can see that the Pavlov reflex is based on the previous learning or training. Otherwise, that Pavlov reflex is not present in from in birth. उस टाइम में यही बताया गया था. So that experiment is relevant to this topic. Now the clinical classification. Ward में यदि आपके सामने कोई patient आ जाए, then how you will tell that this is this reflex. So clinical classification of reflex, or in of the reflex classification of the patients. For that we classify as a deep reflex, superficial reflex, visceral reflex, and pathological reflexes. So we will study one by one. What is deep reflex, what is deep reflex is basically when we talk about the tendon reflexes. When we talk about the tendon reflexes, जैसे biceps, triceps और इन सब की बात हम कर रहे थे, that is the deep reflex. Superficial reflex, like when we say like the corneal reflex, जैसे cornea अपनी इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए एक छोटा सा भी यदि कुछ कॉटन बड से टच किया जाए तो हमारे आई बॉल का ब्लिंक हो जाए. So like the corneal reflex or the conjunctival reflex, it is also like that. It's called as the superficial reflex. Visceral reflex, examples of visceral reflex जैसे हमने एक baroreceptor बताया. Similarly there is a reflex like the light reflex. हमारे आई बॉल में यदि लाइट दिए जाए इन रिस्पॉन्स में हमारे पुपिलरी मसल्स का यदि कॉन्ट्रैक्शन हो, it is basically also another type of reflex. There are few reflexes which are normally not present. There are few reflexes which are normally not present, but they are present in some diseases only, and they are giving the clue to the diagnosis of that particular disease. And this type of reflexes are called pathological reflex. And one example of pathological reflex is Babinski sign. Babinski sign is an example of pathological reflex. We will also discuss this when we discuss about the details between the differences of upper motor and lower motor neuron paralysis. जब हम लोग अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस के डिफरेंसेस को फिर से पढ़ेंगे. मैंने एक बार इस बारे में चर्चा किया हुआ है क्लास में, but still if we will revise that topic, that what is meaning of the upper motor, what is meaning of the lower motor, and that part we will discuss after the completion of the reflex components, और जिससे हमारा CNS में मोटर और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने का हो जाएगा. So at that time we will discuss. Spinal cord reflexes, it can be muscle reflex, it can be एक और भी है जो spinal cord reflex को categorize किया गया है in the form of muscle reflex, in the form of cutaneous reflex. Muscle reflexes like the stretch reflex and the lengthening reaction. या the lengthening, यहाँ lengthening word का meaning है that is relaxation, means excessive stretch की वजह से यदि relaxation हो जाए, that is also called as lengthening reaction, or it is also called as the inverse stretch reaction, inverse stretch reflex, ISR. ये इसको ये भी बोलते हैं, इसी को गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं. Cutaneous reflex is the flexor reflex or the pain reflex. So this is called cutaneous reflex. This is the diagram showing you the stretch reflex, and in exam you may get you may get a question like define reflex, draw a level diagram showing the different components of reflex arc. In that time you should draw this type of diagram. You should try to explain that in the same diagram इसमें दो तरह के reflex दिखाए गए. You can see इसी में ही इसमें दो तरह के reflex है. वो इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सेम टाइम में एंटागोनिस्ट मसल रिलैक्स करता है. And this type of thing is called reciprocal inhibition. Reflex का ये एक property है. You can see the same diagram that जैसे वो hit करते हैं तो inhibitory. यहाँ पे you can see there is a separate interneuron is present, but in the primary stretch reflex you are not seeing any interneuron. You can see that there is a directly involvement of the sensory and motor. So this thing you should try to explain. एग्जाम में क्वेश्चन के बारे में जैसे मैंने बात किया तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से ये आ सकता है
define reflex, reflex. देन उसके साथ में ये आ सकता है क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, जो अभी हमने बताया. यू शुड ट्राई टू क्लासिफाई एज मेनी बेसिस. अभी तक हमने जितने सारे बेसिस आपको बताए, फंक्शनल, एनाटॉमिकल, दैट इज क्लिनिकल, और उसके बाद उससे पहले भी हमने बेस्ड अपॉन द इंटीग्रेटेड सेंटर. सो इस तरह से डिफरेंट तरह से आपको रिफ्लेक्स के बारे में बताना है. Then in exam you may get a question like draw the level diagram of reflex arc, and sometimes they also add the properties of reflex. Properties of reflex, इसके अंदर आपको वो सारी प्रॉपर्टीज बतानी है, like the stretch reflex क्या होता है, कैसे होते हैं. Then what is reciprocal inhibition, what are the one example of the, so the different reflexes में क्या क्या टाइप के प्रॉपर्टी एक्टिविटीज हमने लर्न किए हैं, लाइक द क्रॉस एक्सटेंसर, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ये सारी बातें उसके अंदर लिख देना. दैट विल बिकम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्स. सो द रिफ्लेक्स आर्क यदि बोला जाए तो इस तरह से आप बता सकते हो, रिफ्लेक्स आर्क इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्स एक्टिविटी. इट इज हैविंग 5 कंपोनेंट्स, एंड ये कंपोनेंट्स अब आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे. एक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्स आर्क स्टार्टेड एज रिसेप्टर पोटेंशियल. ये भी हमने चर्चा किया हुआ है सेंसरी सिस्टम में, जो कि सेंसरी ऑर्गन में जनरेट होंगे. देन पास थ्रू द एफरेंट नर्व इन द सीएनएस. इट इज ग्रेडेड एज एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, post synaptic potential, then pass to the effector organ through efferent nerve. And this is basically the same diagram showing you the reflex arc. You can see the 5 components. First, sensory receptor, sensory neuron, integration center. In this case, it is the spinal cord. Sometimes there is involvement of interneuron, sometimes no interneuron, direct motor neuron, and then the effector. मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स हमने डिटेल में पढ़ लिया है. सो आई एम जस्ट रशिंग आउट दिस. एग्जाम में कभी कभी आता है एक्सप्लेन मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सप्लाई ऑफ मसल स्पिंडल एंड इट्स वेरियस फंक्शंस. फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ. एग्जाम में कभी कभी आता है एक्सप्लेन मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ मसल स्पिंडल विथ इट्स नर्व सप्लाई. मसल स्पिंडल और उसके नर्व सप्लाई के साथ ये क्वेश्चन आते हैं. देन आल्सो मसल स्पिंडल के फंक्शनिंग मींस हाउ दे रेगुलेट टोन एंड द वेरियस रिफ्लेक्सेस. ये कैसे टोन और रिफ्लेक्सेस को मैनेज करते हैं, इस तरह से. एंड हाउ दे आर कंट्रोल. सो कभी कभी उससे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सुप्रा स्पाइनल कंट्रोल्स, जो पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किए हैं. तो ये टॉपिक कभी कभी इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में आता है. एंड दिस टाइप ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन इफ कम्स, you will feel lucky because you understand every component of this topic now. It is a best known monosynaptic reflex, it is a somatic reflex, a spinal cord is integrated center, spindle is basal spindle is the afferent sensory. इसके 2 कंपोनेंट होते हैं afferent nerves, annulospiral and flower spray ending. Annulo is the primary 1A fiber, secondary is the flower spray endings, and efferent nerve is the extrafusal fibers, basically the alpha motor neuron जो उसको सप्लाई करते हैं, और intrafusal fibers are supplied with the gamma motor neuron. So these are the efferent nerves. So ultimately this is basically the muscle spindle. इसमें एक और कंपोनेंट है, we should know about the reaction time. जैसे हमारे कोई स्टिमुलस आए and how we are reacting for that, that is called reaction time. It is the time between the application of stimulus and response. So the stretch reflex is the quickest at all reflex. It depends upon the number of synapse. You know this part कि यदि synapse ज्यादा होंगे यदि किसी रिफ्लेक्स के इन्वॉल्वमेंट में, तो उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा. यदि मोनोसिनेप्टिक होगा then that is called as synaptic delay. इसका बेसिस हमारा synaptic delay. It is also called as central delay. It is the time taken for the reflex activity to traverse the spinal cord in a stretch reflex. It is about 0.6 to 0.9 milliseconds. It is very well developed in anti-gravity muscles such as extensor group of muscles of legs and